So now today's sutra begins with the siddhi, which can be termed as kriya siddhi. So, kriya siddhi means power of action. Because having knowledge is one kind of siddhi, and controlling things, doing certain things, that is another kind of siddhi. So the first kriya siddhi is mentioned in today's sutra, and this sutra is really extraordinary. The siddhi is also extraordinary, almost like a fairy tale, almost like something very fantastic. So what this sutra reads: Bandha karana shaithilyat prachara samvedana च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण के शैथिल्य से और प्रचार या संचार का ज्ञान होने पर दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि होती है। Translated in English: when the cause of bondage gets weakened and the moments of the mind are known, the mind can get into another body. Kaya Pravesh. It's a very famous siddhi. Often in yoga literature, they talk about Kaya Pravesh, ability to enter into another person's body. That is what is this siddhi about. So now it's very simple. It says that these words Bandha Karana Shaithilya Prachar Samveda has been explained in the Bhashya. Same way the commentator has also talked about it. So we'll try to understand what it's meant by this Bandha Karana Shaithilya. And in this, perhaps we will understand the entire process of yoga, what yoga believes in, what yoga philosophy is, and what their aims are. That also will become clear. Because this sutra, when it is talking about Bandha Karana, it is talking about something which is very, very fundamental to human experience, fundamental to human beings. We often find that many a times we are just helpless in front of the circumstances and events and whatever is happening around us. And not only that, we also often wonder why we have certain kind of body, why we have certain kind of limitations, why our thinking is in certain manner, and why we are so limited in life, why we are so restricted in life. So these are the questions which often bother us, but very few people can really go into the detail of it and pursue it to the logical ends and try to find answers. These thoughts come, these thoughts go, like so many noble thoughts, good thoughts which come in our mind often. They come fleetingly and they go away. We are not able to retain them. So like that, these right kind of questions also sometimes arise in our mind. And then we let it go because we are not able to find correct answer. And we don't have any person with whom we can talk about these things. Because these questions are really bothersome and not everybody understands. But then these are questions which everybody has in their mind. So how yoga answers that this world is going on because of the karma theory, karma siddhant. And human experiences are guided and regulated by the karma siddhant. So as our actions are, as our karma sanskaras are, accordingly we acquire the body. Accordingly, we acquire the experiences, and accordingly, the lifespan is determined. So each one, when somebody asks that why I am born to this particular family or this particular circumstances, the answer would be that it is because of the karmas. So that is the theory which is touched in this, and this bandha karana is referring to that. So what is the bandha karana? Bandha karana is the karma sanskaras in the form of dharma, adharma.
From the Sankhya point of view, we will see the bhavas, dharma, jnana, vairagya, aishwarya, adharma, ajnana, anaishwarya, avairagya. These are the 8 bhavas which really determine the trajectory or the direction of a particular person. So what kind of sanskaras a person is born with, they will determine the course of life, and they will determine the kind of body we have. All human beings look alike. The hardware is like similar. Brain is there, eyes are there, ears are there, 5 gyanendriyas, 5 karmendriyas, heart is there. But then no two individuals are same. They are totally unique. They are totally different from each other. So in spite of having millions of people of similar kind on earth, no two persons match with each other completely. There will be a lot of differences. And these differences also will be again determined by the karmas. Each individual, even the so-called twins, they might have born at the same time from the same womb, but still they will have different karmas. And accordingly, their life will be. So this sutra, when it says bandha karana shaithilya, so what is this bandha karana? It is the karma in the form of dharma and adharma. So how the cycle of karma goes on, let us briefly understand it. We are performing actions, that is karma. We are thinking, that is also karma. Any activity we do, any activity done by an organism can be constituted as karma, can be termed as a karma. Whatever actions we are performing, they are all karmas. Now, why we are performing these karmas? If this question is asked, mostly few of us will be guided by this lofty ideal of dharma, jnana. We are doing karmas because we think that these karmas will put us in a position where we'll be experiencing right things. So we are always worried about our well-being. We are always worried about good things coming our way. We are interested in right kind of good experiences. So all our actions are guided in that manner. And there is another important factor which we often overlook, and that factor is the pain. We want to avoid pain at any cost. So this exercise I had asked earlier also to do and think about it deeply, because only if we think about this deeply, what I'm going to suggest, we will be able to understand what ticks us, what motivates us, what leads our actions. And if we are interested in doing the right kind of actions, taking charge, then we'll have to deeply think about it. Without that, we cannot move ahead in yoga. We may hear good things, we may read good things, we may meditate, we may do asanas, but unless we understand our motivations for our karmas, it is very difficult to change the course of destiny or fate, as it is called. Destiny or fate is nothing but the consequences of the karmas we have performed. So in a way, whatever we are experiencing in life, we have a role to play in that, or we have played a role in that, that whatever our past actions were, accordingly the experiences are being gathered right now. So this is how the karma theory works. So very simply put, what we do throughout the day, this is the hard fact, the real fact. You experience it day in, day out. It is not theory. Since the time we got up today until now, what have we done? We have to ask ourselves. This is the exercise. This is the question we have to ask ourselves. What have I done today? And why did I do it? So maybe for that, it will be a worthwhile thing every day.
every day for 5-10 minutes we take some or other strong actions we had performed, and we ask the question, why did we do it? What was the motivation? And if we had not done it, what would have happened? Why did we do it? This kind of questioning has to be done for some time. And then now, if we reflect back on whatever we have done today, consciously we might not have thought, okay, I'm doing this for this purpose. But what were the two major motivations which guided us? It was to get the pleasure and avoid the pain. This was the major factor which was guiding us unconsciously. So unconsciously that we think that we are doing right thing and we are doing dharma, but it might be only because we like it, so we are doing it. So most of the actions, and then we can go deeper into it also. At one point, we have to go deeper into it also. So I'll give you a little advance indication of how to go deeper into it. You can ask yourself, each one of us can ask ourselves, whatever actions I perform, how many of those actions were done by me willingly, out of my free will, and how many actions I did were forced upon me by nature, by circumstances, by events, by surroundings, by environment. This is a very important meditation. This is a very important thing which we can do, and we should always do. Because only when we do this kind of exercise, we will realize that how limited our free will is, how limited our freedom is, how bound we are. ये जो बंध कारण है, ये बंध के कारण से हम कितने बंधे हुए हैं, ये हमको समझ में आ जाए. तो ये समझने के लिए खाने का टाइम डालना है. इस प्रकार का मेडिटेशन करना जरूरी है. ये जब करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ज्यादातर एक्शन जो हम लोग बोलते हैं, कई लोग प्राउडली बोलते हैं, आई डू दिस, आई डिड दैट एंड आई डिड इट फॉर आउट ऑफ फ्री विल. I thought this is good, so I did it. But if you go deeply into it, you will find that often the circumstances are forcing you to act. And our actions are not actions, but they are only reactions. Because action, according to yoga, is something which is done very thoughtfully, which is done out of free will. उसको योग में कहते हैं पुरुषकार कर्म. पुरुषकार कर्म मतलब पूरी तरह से पुराने बंधनों से मुक्त होके अभी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ये निर्णय करना कि ये एक्शन करूं कि नहीं करूं, ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है. इस प्रकार के विवेक का इस्तेमाल करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको हम कहते हैं पुरुषकार कर्म. और केवल ऐसा कर्म जो होता है वो हमको मुक्ति दे सकता है, वो नए संस्कार बना सकता है, वो हमको पुराने बंधनों से छुटकारा दे सकता है. बाकी सभी प्रकार के एक्शन जो हम करते हैं, अगर वो कंडीशनड रिएक्शंस हैं, तो वो पुराने संस्कारों को बांधते हैं, वो पुराने संस्कारों को मजबूत करते हैं. तो जो चीज हमको अच्छी लगती है वो करते रहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमको अच्छा लगता है उसका बंधन बढ़ते जा रहा है. जो चीज हमको बुरी लगती है उसको अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि जो चीज हमको बुरी लगती है, जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, उसकी जो वासना है, उसके जो संस्कार है, उसका जो कर्म है, वो स्ट्रांग होते जाता है. इसका मतलब आगे की सिचुएशन वैसी की वैसे ही रहने वाली है. We will be always guided by likes and dislikes, as we were guided today, as we are being guided every time. तो आज सुबह से लेके जो भी किया है उसमें दो चीजें कॉमन दिखाई देगी. हम वही चाहते हैं जिसमें हमको सुख मिले, और हम वो नहीं चाहते जिसमें दुख मिले. तो पूरे एक्शन कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम ऐसे ही करते हैं कि सुख तो मिलता रहे लेकिन दुख अवॉइड होता रहे. ये हमारे पूरे दिन की कार्यकलाप रहता है, पूरे दिन की दिनचर्या रहती है. कोई नई सर्कमस्टेंसेज आ गई तो उसमें पहले तो हम ये देखेंगे इसमें मेरे को तकलीफ तो होने वाली नहीं, इसमें मेरा नुकसान तो नहीं होगा, इसमें कुछ खतरा तो नहीं है, मैं कंफर्टेबल रहूंगा ना.
ये पहला सवाल, पहला अनकॉन्शियस थॉट्स जो रहता है, और उसके द्वारा अगर हमको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल, या ये नई चीज है, मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा, तो वी बिकम अफ्रेड एंड वी ट्राई टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट। जहां हमको दिखाई देता है कि इसमें थोड़ा सुख मिलेगा, प्लेजर है, उसमें हम ब्लाइंडली दौड़ पड़ते हैं, उसमें हम जंप मार लेते हैं। तो ये हम लोग की डेली की लाइफ स्टाइल है, और ये डेली हमारे कर्म है। तो इस लाइक्स और डिसलाइक्स जब भी करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे पाप और पुण्य पैदा होगा। हमारे जो भी एक्शन है, या तो वो पाप रहेंगे या तो पुण्य रहेंगे। किसी का भले ही रागवश हम लोगों ने, प्रेम की वजह से, लगाव की वजह से, अटैचमेंट की वजह से हमने किसी का भला किया, भले ही वो किया रहेगा राग के वजह से, अटैचमेंट की वजह से, लेकिन पुण्य तो हो गया। तो उसका फल क्या होगा? पुण्य होगा। और जब अपने को प्लेजर चाहिए, तभी हम दूसरे को डिसरिगार्ड करके जब भी अपना प्लेजर देखते हैं, तो कई बार हम दूसरों को हर्ट करते हैं। और जब भी दूसरों को हर्ट करते हैं, या जब कभी हमारे वजह से, चाहे कॉन्शियसली करें चाहे अनकॉन्शियसली करें, ये बात अलग है, कॉन्शियसली करें अनकॉन्शियसली करें, लेकिन जब भी हमारे एक्शन से कोई हर्ट होता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी को दुख पहुंचता है, तो उसको सामान्य तौर पे पाप की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये बात तो योग शास्त्र में बहुत पहले से कही हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूत्र इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो मैंने जैसे कहा कि किसी का भला करना ये पुण्य है, किसी को दुख देना ये पाप है। अब इस चीज को, ये पाप पुण्य की जो परिभाषा है, इसको अगर हम देखेंगे तो कुछ संतों ने भी इसके बारे में बोला हुआ है। तो कौन से संतों ने बोला हुआ है? आई जस्ट अ मोमेंट, आई स्टॉप एंड देन वील रीस्टार्ट। ओके। तो ये जो सादी सी चीज है कि जब हम किसी का भला करते हैं, तो वो पुण्य की कैटेगरी में जाता है। मतलब उसका जो पुण्य का जो फल मिलेगा, वो हमको अच्छे अनुभव के रूप में मिलेगा, सुख के रूप में मिलेगा। और अगर हमने किसी को हर्ट किया है, किसी को दुख दिया है, तो वो पाप की कैटेगरी में जाएगा, और उसका जो परिणाम होगा, उसका जो नतीजा होगा, वो हमको दुख के रूप में मिलेगा, दर्द के रूप में मिलेगा। तो ये सीधी सी बात है। और इसको संतों ने कैसे कहा है, इसको भी जरा देखें तो जैसे हम लोग महाराष्ट्र में संत शिरोमणि है तुकाराम। तुकाराम के अभंग आपने बहुत सुने रहेंगे। तुकाराम बहुत महान संत जो महाराष्ट्र के हुए हैं। वो क्या बोलते हैं, एक सिंपल भाषा में बोलते हैं, पुण्य पर उपकार, पापते पर पीड़। पुण्य पर उपकार, पाप ते पर पीड़। पुण्य क्या है? परोपकार। और पाप क्या है? दूसरे को कष्ट देना। पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देना। अब ये महाराष्ट्र का संत ये हुआ 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, जब ये हुआ महाराष्ट्र में हुआ। मुझे मालूम नहीं कि कबीर और तुकाराम कभी मिले होंगे, क्योंकि कबीर तो बनारस में थे, कबीर तो वाराणसी में थे, और तुकाराम यहाँ देहू में थे, महाराष्ट्र में। तो ये जो पुण्य पर उपकार, पापते पर पीड़ा, ये तुकाराम बोलते हैं। तो कबीर क्या वो बोलते हैं, इसी चीज को कबीर अपनी भाषा में बोलते हैं। कबीर जी की जो हिंदी है उसमें बोलते हैं, परहित सम धर्म नहीं भाई। क्या बोल रहे हैं? परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सम धर्म नहीं भाई, जो परोपकार, तुकाराम परोपकार बोल रहे हैं, वो उसको कबीर जी बोल रहे हैं परहित, दूसरे का हित, दूसरे का भला करना। इसके समान कोई धर्म नहीं है, इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने जैसा कोई भी अधर्म नहीं है। तो दो संत अलग अलग बातें बोल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन एक ही बात बोलते हैं, शब्द अलग है, आइडिया वही है। और यही आइडिया योग में
कि जब हम एक्शंस कर रहे होते हैं तो जाने अनजाने या तो हम किसी का हित करते हैं या तो हम किसी का अहित करते हैं, या तो हमारे हाथों से पाप होते हैं या तो हमारे हाथों से पुण्य होते हैं। तो ये पाप पुण्य का मिश्रित रूप से जीवन में असर होते रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में भी जो अनुभव आते हैं वो तो या तो दुख के रहते हैं या तो सुख के रहते हैं। कभी थोड़ी देर के लिए सुख आता है, कभी थोड़ी देर के लिए दुख आता है। इस प्रकार से हम लोग जीवन चलते रहता है। जब आदमी बहुत विचार करता है, अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को थोड़ा सा सुधारने का प्रयत्न करता है, तब वो इस दिशा में जाने का प्रयत्न करता है कि कुछ भी हो जाए, जितना हो सके मैं सबका भला करूँ। जितना हो सके मैं राग और द्वेष, ये जो सुख और दुख, इससे मुक्त रहने का प्रयत्न करूंगा। इसीलिए संत लोग जो बोलते हैं कि सभी परिस्थितियों में सम रहो। भगवत गीता में क्या बोलता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कभी भी मन का आपा नहीं खोना चाहिए, मन का बैलेंस खोना नहीं चाहिए। तो कुछ कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुख और दुख में समान भाव से रह सकते हैं। ऐसे लोगों के कर्म का बंधन कम होते जाता है, क्योंकि अब जो वो कर्म करते हैं उसमें पुण्य का प्रभाव ज्यादा रहता है, और पुण्य के प्रभाव से धीरे धीरे पुण्य पाप दोनों से वो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि पुण्य हो या पाप हो, अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर पुण्य है तो आपको अच्छे अनुभव आते रहेंगे, अच्छे अनुभव आएंगे तो और अटैचमेंट बढ़ेगी, और अटैचमेंट बढ़ेगी तो कुछ ऐसे एक्शन होंगे कि जिसमें किसी का नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं पाप होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए योग क्या कहता है कि आप अच्छा बुरा करते रहो, लाइफ तो चलते रहेगी। इस प्रकार से जीवन में हम लोग अलग अलग जन्मों में जाते हैं, और फिर ये प्रक्रिया चलते रहे, जन्म मरण का चक्कर चलते रहता है। इसी को भव चक्र बोलते हैं। इसी को पतंजलि के भाषा में संसार चक्र बोलते हैं, और गौतम बुद्ध की भाषा में बोलेंगे तो भव चक्र। ये भव जो उत्पन्न होता है ये पाप पुण्य की वजह से होता है, राग द्वेष की वजह से होता है। तो ये संसार चक्र में ना अविद्या जो है वही रूट कॉज है, अज्ञान जो है वही रूट कॉज है। अज्ञान की वजह से ये सब होता है। अज्ञान की वजह से हमको राग द्वेष होता है, राग द्वेष की वजह से पाप पुण्य होता है, पाप पुण्य की वजह से सुख और दुख होता है। तो सुख दुख पाप पुण्य, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो व्हील है, ये चलते रहता है। ये व्हील से हम लोग इसी को बंध कारण कहते हैं। तो कर्मों की वजह से आज हमारा जो शरीर है वो हम लोगों को कर्मों की वजह से मिला है। शरीर में जो स्ट्रेंथ है वो कर्मों की वजह से है, शरीर में जो वीकनेस है वो कर्मों की वजह से है। और ये कर्म केवल पिछले जन्म के हैं ऐसा नहीं, इस जन्म में जो हम करते हैं उससे भी हमारे शरीर के ऊपर परिणाम होता है। तो ये सूत्र क्या बोलता है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो शरीर में बंधा रहता है, शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। और ये किस भावना में दिखाई देता है कि हम शरीर को ही आत्मा मान के चलते हैं, हमारा शरीर ही सब कुछ है। तो हमारा मन जो है वो शरीर के साथ पूरी तरह से बंधा हुआ है। अल्टीमेटली कर्मों के कारण हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वही शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार का शरीर, जैसी वासनाएं रहेगी वैसा शरीर रहेगा। हम जिस प्रकार की भी वासनाएं हमारी हैं उसी प्रकार का शरीर हमको प्राप्त होगा, ये समझ के चलना है। और इसी के आधार पे हम लोग ये भी निश्चित कर सकते हैं, अगर हम अपनी वासनाओं को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें, अगर अपने मोटिवेशंस को बदल दें, तो हम अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। इस जन्म में भी ये संभव है, और ये होता हुआ देखा गया है। ये अनुभव है, योगियों का भी है और बहुत सारे सामान्य लोगों का भी है। अगर व्यक्ति नियम से रहना चालू करता है तो शरीर में परिवर्तन आता है, लेकिन फिर भी वो शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर में थोड़ा बहुत बदलाव तो ला सकता है, लेकिन शरीर से मुक्त नहीं हो सकता। He cannot become free because mind is totally bound to the body. Mind creates body and then mind thinks that I am the body. वही अविद्या की डेफिनेशन भी है, अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। अनात्म को आत्मा मानना यही अविद्या है, यही अज्ञान है। और यही अज्ञान शरीर को बांध के रखता है, मन को बांध के रखता है शरीर के साथ। तो हम लोग मन को इस ढंग से हम लोग मना लेते हैं कि वो शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसी को बंध कारण कहा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस जो ये सूत्र देखे हम लोगों ने, यू रिमेम्बर दैट वी डिड काय व्यूह ज्ञानम इन सूत्र 29। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काया के व्यूह के ज्ञान का ज्ञान होता है। काया की रचना कैसी है, हमारा शरीर कैसे बना है, कैसे काम करता है, इसका ज्ञान होता है। उसके बाद में हम लोगों ने सूत्र 34 में क्या देखा, हृदय चित्त संवित, हृदय पर
संयम करने से चित्त का संवेद, चित्त का ज्ञान होता है। चित्त कैसे काम करता है, चित्त में क्या क्या चीजें हैं, चित्त शरीर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब ज्ञान हमको चित्त संवित में होता है। और उसके बाद में स्वार्थ और परार्थ पर संयम करने से हमको पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष का ज्ञान होता है मतलब अपने अंदर जो चेतना है उसका ज्ञान होता है। तो ये तीन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद में ये सूत्र क्या बोल रहा है कि बंध कारण शैथिल्य, शरीर के अंदर जो मन के बंधने के कारण है उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे समाधि में ऐसा संभव है कि मन की और शरीर की सेपरेटनेस या अलग होने की संभावना या उसका अलग होने का जो ज्ञान है वो हम लोगों को होता है। चित्त अलग है, शरीर अलग है। वी आर ऑक्यूपाइंग अ बॉडी, बॉडी इज अवर इंस्ट्रूमेंट, वी आर नॉट द बॉडी। ये हमको समझना है। और ये योग की ये सोच है कि हमारा शरीर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है? हमारी बुद्धि इसको इस्तेमाल कर रही है, हमारा चित्त इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो चित्त ने ये शरीर को बनाया है, लेकिन जब ये ज्ञान नहीं रहता है तभी वो बंधा हुआ रहता है। लेकिन ये जब ज्ञान होता है तभी व्यक्ति को ये समझ में आता है कि चित्त अलग है और शरीर अलग है। अगर ये दोनों अलग हैं तो दोनों को अलग किया जा सकता है। तो अलग कैसे किया जा सकता है? ये चित्त जो है वो हमारे शरीर में कैसे काम कर रहा है ये भी मालूम होता है। तो दो प्रकार के ज्ञानों की बात यहाँ पे, दो प्रकार की क्षमताओं की बात यहाँ पे कही गई है ये सूत्र में। बंध कारण शैथिल्य, तो ये बंध, चित्त को शरीर के साथ बांध के रखने वाले जो कर्म है उनकी समझ आने के बाद में चित्त के बंधन को थोड़ा ढीला किया जा सकता है। वन कैन रियली loosen that bond. Once the bond is weakened, then chitta can separate from the body. Chitta can go in other direction. And then prachar samvedanacha parasharira avesha. Prachar samvedanacha. Prachar samvedan is what? The knowledge as to how chitta actually regulates the body, how chitta works in the body, which are the nadis or nervous system, which part of the nervous system is responsible for the chitta functioning. If those nadis are not there, chitta is not occupying those nadis, then our chitta will not be able to function through the body. तो ये दोनों चीजों का जब ज्ञान होता है तभी ऐसी संभावना, there is a possibility that chitta becomes free and that chitta can enter another person's body. This is the simple meaning of sutra. Very fantastic kind of siddhi, very difficult to believe that such thing is possible. But then they have given this scientific or the reasonable logical sequence of this reasoning, that this is how the chitta can become free, because chitta is bound, chitta is creating the body is an instrument, chitta occupies it. If it occupies it, it can empty it also, it can go out also at will, but we don't know the method how to do it. So method is suggested by the sanyama techniques, where this knowledge is provided, where how one can leave the body. Again in Sutra 43, this idea will come, where a person can live without body. One can remain without body. So Videha, experiences are talked about. That will come later. But here now they are saying that once chitta can become free and one can enter another person's body. Now there are recorded cases also. Very often the classical example which is given is of that of Shankaracharya. We know that in ancient India, all the wars between intellectuals were won or fought by reasoning, by arguments, or by exchanging viewpoints, trying to convince each other logically. And when the viewpoints were established and the opponent was supposed to accept it, and then it was his defeat. So like that, we know that at a very crucial juncture of Indian society, Shankaracharya came into being somewhere in 8th, 9th century. It was a crucial period. Lots of changes were taking place in the society. Entire Indian, social structure was changing at that time. That is the time when Shankaracharya came and he tried to establish his viewpoint. He gave a different kind of,
viewpoint to the living of life and this idea of Vedanta, Dvaitvad, he was trying to establish, and through that he was trying to establish the rule of Vedas, uh, understanding of Vedas, teachings of Upanishad. And in that process, he was traveling all over India, and wherever there was opportunity, he will, argue with the great scholars, and he will try to convince them about his viewpoint. And he was able to succeed to a large extent. But he had an opponent, a mighty opponent in the form of one Pandit called Mandan Mishra. So they say that there was a debate between Mandan Mishra and Shankaracharya. And Mandan Mishra, not only Mandan Mishra was very great scholar, but his wife was also a great scholar. So as the debate was going on, Shankaracharya came to a point where he was about to be defeated by Mandan Mishra. Why he was about to be defeated by Mandan Mishra? Because his wife asked the question. His wife suggested to Mandan Mishra to ask Shankaracharya about the experiences of a married life. Now Shankaracharya was a brahmachari. He did not have any experience of married life or a householder. And the questions which Mandan Mishra was asking were of householders' duties and householders' life. So now Shankaracharya was confused. What should he do? So he asked for time. जैसे हम लोग खेलते हैं बचपन में टाइम प्लीज बोलते हैं तो शंकराचार्य ने बोला टाइम प्लीज and then he withdrew. And they say that Shankaracharya had this siddhi that he could enter another person's body. So he entered another person's body who was a householder. Various versions are there. He entered the body of a king, or he entered the body of a dead man, whatever it is. But then it is suggested that he entered the body of another person who was married. And through that body, he experienced what was this married life. And the experiences which Mandan Mishra's wife was asking, all those experiences he gathered in this new body, which he acquired by Kaya Pravesh. So after having experienced them, he came back to his own body, and then the debate continued. Time please was over, and the debate continued. And then Shankaracharya was able to defeat Mandan Mishra. And the story goes that finally Mandan Mishra and his wife, they accepted the supremacy of Shankaracharya, and Shankaracharya was able to establish his mata or his point of view. Now, this is one very important, example which is given where Parkaya Pravesh. But Parkaya Pravesh Siddhi has been often talked about in yoga literature. And then, as I was thinking about this sutra, few years back I was studying Mahabharat Moksha Dharma Parva. Why I was studying? Because Dr. Jaydev had written a thesis on Moksha Dharma Parva way long back, somewhere in 41, 42. And he got a doctorate because of this research. Dr. Jaydev was PhD, and his thesis material was Moksha Dharma Parva. So when we were trying to write a book on doctor's life, that time the editor of the book, he had asked me to go through the Moksha Dharma Parva, particularly those writings of Dr. Jaydev, and then trying to find out what was, how it was done and what was useful. So a few years back I worked on, and that book came, that book was published by Yoga Institute. Doctor's uh, biography is there by Professor Subbarao. So Subbarao's wife is, by the way, here only, Kiran Rao. You can see on the screen. Kiran Rao is Subbarao's wife, who was the editor of that book. So as I was reading this, again, recently also I started reading this Moksha Dharma Parma, because it is a very great work and it is a treasure trove for a yoga student. If he wants to understand certain things, one should read this Shanti Parva, and in that Shanti Parva, Moksha Dharma Parva is a very important writer. Many chapters are there. So in those chapters, one very important chapter is 320, where there is a dialogue between one great yogini. Her name is Sulabha, and King Janak. Now this King Janak was the disciple of Maharshi Panchashikha. Panchashikha was the great Sankhya teacher, yoga teacher.
His name comes in Mahabharata, Panchashika. So the tradition is Kapila Muni, Asuri, Panchashika, Asit Deval, Jaigishavya. So many Rishi, these yogi paramparas are there. So their mention is found in Mahabharata Moksha Dharma Parva. Perhaps that is why Dr. Jaydev had selected that work to study and do research on, because it is related to Sankhya and Yoga. And doctor's topic also was Sankhya in Moksha Dharma Parva. That was the topic. So I was reminded of this particular chapter where this great yogini, he has attained highest in yoga and freely she is moving all over the earth. And she could not find a match for herself who will be suitable. So she is a sannyasi. She's not married and she's just roaming around freely because she has attained that freedom. It is like a Jivan Mukta state. She has attained that. And while traveling, she comes to know about King Janaka, Janaka of Mithila. And many yogis told her that Janaka is a great saint and he has attained Jivan Mukti. He has attained moksha and he knows everything about the Atma. And it is a fact because Janaka was also the disciple of Panchashika. Panchashika had no doubt about all these matters and he had established Sankhya. So to test the knowledge of Janaka, Sulva goes to Janaka's court and meets him. And there are big pundits, big scholars sitting in the king's court. And she starts talking to Janaka. But she had great powers. So just to see exactly how Janaka thinks, she enters his mind. She enters the mind of Janaka. And the dialogue which is taking place, the exchange of words and exchange of dialogue, which takes place, it is taking place in the Janaka's mind. So she is already established in Janaka's mind. So this was another instance which came to my mind, which I shared with you, that Sulba was able to enter Janaka's mind. So now their exchange is going on. Then this is again, this chapter is very important. Imagine thousands of years back, a yogini is debating with a male yogi in the form of Janaka. And at that time it was established that there is no difference between men and women as far as the yoga is concerned. Both are equal authority, both have got equal authority to study yoga and both can rise to great heights. So one of the conclusion of the debate between Janaka and this was that this Sulabha was able to tell him, because Janaka became little, uh, disturbed. He said, you being a female, how you have entered my body? So that time he takes offense and he's feeling bad about it. That shows that still he has got some kind of reservation, some kind of dislike, or some kind of discrimination between the male and female. So he has not attained that level of equanimity, that level of understanding where he treats everybody as safe. That was not attained. So now Sulbha is telling him that the difference is only in the body. When we are living at the level of body, there is a male, there is a female. But at the level of spirit, there is no male female. आत्मा के स्तर पे सब एक ही हैं. पुरुष का आत्मा, स्त्री का आत्मा एक ही है. So this was one fact which was established, and it's a very important chapter from the development of thinking is concerned. And then that is the instance where she was able to enter the body of the Janaka, and ultimately Janaka is really humbled, and then he learns his lesson, and that's how the chapter ends. And this chapter is quoted why? Because Yudhishthir is asking certain questions to Bhishma Pitama. So this entire Moksha Dharma, Yudhishthir, it begins with the Yudhishthir's queries to Bhishma Pitama, and Bhishma Pitama is explaining all the things. Very big chapters are there, very fantastic ideas are there. In fact, there is no spiritual practice in the world which is not found in Moksha Dharma. It is so rich. It is so beautiful. All spiritual practices you will find mentioned there. So Yudhishthir is
having this doubt in the mind, and Bhishma, by giving example of Janaka and Sulba, is able to remove the doubts from the mind of Yudhishthira. And that's how the story goes. So here we have to understand that this Siddhi, there are instances where such kind of things are mentioned. We may not be able to understand how it is happening, but I told you that this is the logical explanation which is given. How far it is convincing, it is not a question of convincing. It's just information. Sorry, I am having little cough today. So if there are questions. When you were talking about free will, I remember like doctor used to give us odd jobs to do, Yeah, and we would do them and feel happy about it. And doctor once said, it's nice that I tell you to do something and you do, yeah, but then a time should come when you should come on your own yeah, and tell me, I'm there. Is there any work to be done? yeah, So that free will, like he wanted us to, like, do things from our own, from that inner inspiration or inner thing. किसी ने कहा फिर कर दिया, अच्छी बात है, but then खुद से खुद चला के वो काम करें, out of a sense of duty or whatever, like, yeah, तो उसका एक अलग मजा है, एक अलग बेनिफिट है, एक अलग वो है. So I just remembered that. And yeah. then, That was a great, testing method by Dr. J. They used to test people. yeah, yeah, We also were asked to do, when we did 7 days camp, we were asked to do karma yoga. So various kinds of cleaning the wall of the institute. That was one of the. Then some people were asked to collect the fallen leaves from the ground. And when doctor did it, he did it in such a masterly manner. After half an hour of work, when everybody assembled, he will ask them, what did you feel? What was your reaction? So if the honestly person shared, suppose if a person felt very bad कि क्या मेरे को ये कर्मियों के नाम पे योगा इंस्टीट्यूट वाले साफ सफाई करा रहे हैं या दीवार साफ करवा रहे हैं, कुछ लोगों को टॉयलेट साफ करने के लिए बोलते थे, but they didn't understand that this was just a way of understanding how spiritually evolved we are, because that reaction showed at what level we were. So just to make us realize that doctor used to adopt these and several methods he adopted. He will suddenly, out of blue, he will come and tell you, go and do this. And he will see how you are reacting to that, how you are responding to that. If you succeeded, then he knew that you are responsible or you can do some better work. So ultimately, from where the reaction is coming, if we meet together and suddenly I tell you, go and wash the bathroom, what will be your reaction towards me? So it all boils down to what we said in the earlier part of the sutra. It is all depending on likes and dislikes. We hate certain things, we dislike certain things, and as long as we are giving way to our dislikes and acting according to the whims and fancies of likes and dislikes, we are not able to break the bonds of karmas. We remain bonded. The bandha karanam is still intact. Chitta is bound to body, chitta is bound to the actions, chitta is bound to the thoughts, चित्त इज बाउंड टू लाइक्स एंड डिसलाइक. राग और द्वेष जब तक चलते रहेगा तब तक, जब तक राग द्वेष को तोड़ेंगे नहीं तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है. कितना भी हम लोग योग का ये पहलू हम लोग देखते नहीं है. हम लोग आसन प्राणायाम बंद मुद्रा ध्यान इन्हीं चीजों को देखते हैं, लेकिन जब हम यम नियम की बात करते हैं तो यम में अहिंसा करो. अहिंसा से क्या होता है? अहिंसा करने से कर्म टूट जाते हैं, because we become free from likes and dislikes. If we practice ahimsa, we break the bond of likes and dislikes. रागों को, राग जो है, राग द्वेष को हम तोड़ देते हैं, अभिनिवेश को हम तोड़ देते हैं, अभिमान को हम तोड़ देते हैं.
यही करना है योग में, यही करना है कि राग द्वेष अभिनिवेश और अभिमान इनको तोड़ना है। इनको तोड़ने का आसान तरीका है यम करो, अहिंसा करो। हिंसा हिंसा कब करता है आदमी? जब उसको गुस्सा आता है, जब वो हर्ट होता है, गुस्सा आता है, तभी वो हिंसा हिंसा करता है। नहीं तो हिंसा का कोई, या तो कोई लालच रहता है। पतंजलि ने बहुत खूबसूरती से बोला है, लोभ क्रोध मोह पूर्वक हिंसा कब होती है? या तो लोभ से होती है, या मोह से होती है, या क्रोध से होती है। ज्यादातर हिंसा क्रोध से होती है। अब बार बार हमको क्रोध आ रहा है, बार बार क्रोध आ रहा है, हम गालियां देते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं, संबंध बिगाड़ लेते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, हमारा बीपी शूटअप हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, क्या क्या नहीं होता। फिर भी हम अपना गुस्से का स्वभाव छोड़ते नहीं है। दिस एंगर इज ऑल्सो बाइंडिंग अस। तो अहिंसा जब भी करेंगे तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है मतलब वी आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू अवर एंगर, वी आर नॉट बीइंग गाइडेड बाय अवर एंगर, वी आर नॉट बीइंग ट्रिगर्ड बाय अवर एंगर, we are not being triggered by our negative emotions of dvesha. And this is how we break that dvesha, this is how we break that hold. और इससे जो है बंध का कारण जो है वो शैथिल्य होता है। इसीलिए इसीलिए योगी लोग धीरे धीरे इतना मुक्त हो जाते हैं कि शरीर में कुछ हो रहा होता है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर सो लिबरेटेड, दे आर सो अवे फ्रॉम द बॉडी आइडेंटिफिकेशन। दिस ultimately, you know, the pain comes from identification, and the highest form of identification is with our own body. मैं जब हम मैं बोलते हैं तो अपने हाथ की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ इशारा करते हैं, मैं, एज इफ ये शरीर ही मैं है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, यही अस्मिता है, इसी से अस्मिता उत्पन्न हो। और अस्मिता है तो फिर राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, अभिनिवेश भी आएगा। राग के भी 100 प्रकार हैं। राग के अंदर में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, स्नेह भी आता है, मैत्री भी आती है, प्रेम भी आता है, ऑब्सेशन भी आता है, अंधा प्यार भी आता है, सब कुछ राग के अंदर आ जाता है। द्वेष के अंदर डिसलाइक, छोटा सा माइल्ड डिसलाइक, माई डिसलाइक, hatred, rage, anger, they all fall under the category of dvesha. तो इनका होल्ड हमारे ऊपर इतना ज्यादा है, और जितना इनका होल्ड रहेगा उतना हमारे मन का होल्ड शरीर पे ज्यादा रहेगा, और शरीर का होल्ड मन पे रहेगा। तो बंध कारण का शैथिल्य हो नहीं सकता है। इन बंधनों को अगर काटना है तो अपने कर्मों का ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू पे अटेंशन टू दीज राग द्वेष। We have to ensure that some part of the day we are trying to do some purushkara karma, some free will karma, or the best way is Bhagavad Gita says karma yoga. In karma yoga, what happens? Karma is not done because you like it or you dislike it. Karma is done because it is your duty. So when you are doing something as a duty, you are free from likes and dislikes. तो सबसे आसान तरीका भगवान कृष्ण ने बताया है, कर्मयोग करो। कर्मयोग के जो भी काम सामने आए उसको ईश्वर की आज्ञा मान के करो, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, उसको बाजू में रखो, लाइक्स और डिसलाइक को बाजू में रखो, एंड डू द एक्शन बिकॉज इट हैज कम टू यू नेचुरली, एंड यू टेक इट एज अ गॉड्स विल, यू टेक इट एज अ गॉड्स कमांड एंड डू इट। इस प्रकार से जब भी हम कर्म करेंगे तो हम राग द्वेष से मुक्त हो गए। बहुत आसान है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि हम राग द्वेष से मुक्त होकर कोई कर्म कर सकें। एक तो धर्म बोल के अगर कम कर्म करेंगे, ये हमारा धर्म है इसीलिए कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, बुरा लग रहा है इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है, इसको करना ही चाहिए। ये एटीट्यूड से जब करेंगे, थिंग्स आर फाइन। And about this idea of doing good, paropkar hit या ahit, हाँ, I think इसमें भी many a times we are not really, you can't be really sure whether you're doing hit or not. Now, for example, giving alms to a beggar, या it may be on the face of it hit. How much hit it is a big question. Feeding pigeons, people do a lot of, like I go for my walks, people are feeding pigeons. It is not good for the city. सोसाइटी। There are इसी तरह से कितनी चीजें हैं which one on the face of it may look hit, यस, but it may not be hit. In the same way, if I'm doing something, my intention is not to hurt.
but the other person gets hurt. So intention is not to hurt, but then if you keep seeing कि भाई किसी को hurt नहीं करना है, तो अभी एक सिंपल सी चीज है कि आगे अगर लाइक मुझे सुबह उठ के मतलब आई मीन टू से देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ वेयर द फैमिली में नॉट अग्री टू और दे मे फील हर्ट. सो आई थिंक वी हैव टू बी मतलब ऐसा है कि कहाँ पे हाँ बोलना है ना बोलना है, सामने वाला हर्ट होता है. तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड क्लियर कि भाई सामने वाला अगर बेकार में ही हर्ट हो रहा है तो फिर इट्स हिज और हर प्रॉब्लम. आई मीन टू से अब हाँ, अभी वो अभी वो माय एक वाइफ एटीट्यूड। वांटेड मी टू कम टू कुंभ, शी वेंट टू कुंभ. आई सेड आई अच्छा। एम नॉट गोइंग. शी ओके। वेंट. 2 दिन गए, यहाँ भागे वहां भागे और करके आई एम हैप्पी हियर एट होम. हाँ। माय कुंभ इज हियर एट होम. तो या शी फेल्ट हर्ट. माय उसका भाई भी बोल रहा था, इवन ही फेल्ट हर्ट. पर देन इट्स देयर प्रॉब्लम, लाइक आई कांट कीप प्लीजिंग everyone and be in the good books of everyone. I think one has to be clear and draw a line. I like that is what I feel lately. this is the reason Sankhya has said something very, very fundamentally truthful thing, that if we are living, there's a noise, prerna. Yeah. Uh, uh, so Sankhya says one beautiful thing that yogis keep in mind. So what Sankhya says, आपको जब सुख मिलता है संसार में, जब ये आदमी सुखी होता है, तो दैट सुख इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज। किसी को दुख होता है उससे आपको सुख मिलता है। आप जो घर में आटा लेके आते हो, गेहूं लेके आते हो, हमको सुख तो मिलता है, लेकिन वो किसके कॉस्ट में मिलता है? वो किसान ने जिसने उसको उगाया रहेगा, उसने कितना कष्ट भोगा रहेगा। तो कोई भी चीज हमारे सुख की अगर देखेंगे तो उसमें किसी न किसी दूसरे व्यक्ति का दुख छुपा हुआ रहता है, उसका कष्ट छुपा हुआ रहता है। इसीलिए सांख्य बोलता है कि आप दूसरे किसी को पीड़ा दिए बिगड़ सुख का भी अनुभव संसार में नहीं कर सकते, इसीलिए ये संसार बंधन है। तो इसके लिए फिर क्या मार्ग है? अभी जो तुमने कहा वो तो बिल्कुल सच है। अब लेकिन उसमें भी अगर डिबेट करने बैठेंगे तो हर किसी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगी। अभी जैसे थोड़ा डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो बोलेंगे अरे यार तुम्हारी वाइफ है, उसने बोला चलो तो तुमको जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा धर्म है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन तुमने कहा कि नहीं, लेकिन हियरार्की ऑफ ड्यूटीज में मेरे को मेरा वेल बीइंग भी देखना है। तो एवरी टाइम आई कैन नॉट प्लीज माई वाइफ। उसके अगर वांट अगर अनरीजनेबल है तो व्हाई शुड आई फुलफिल इट? तो ये तो मतलब डिबेटेबल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या अपने पर्सनल बिहेवियर में क्या रखना है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये ध्यान में रखने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो भी हम करें उसमें हम लोग ये निश्चित करें कि इसमें सबका सुख है, सबका भला होने वाला है, सबका हित है और सबका सुख है। जितना हो सके ये भावना से प्रेरित होकर, पाप तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा भी सुख लेंगे तो किसी की कॉस्ट पे होगा, तो कर्म बंधन तो होंगे ही होंगे। तो योगी क्या करता है? वो इस ढंग से काम करता है कि वो एक तो ही इज नॉट प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक, और जो भी एक्शन है वो इस ढंग से करता है कि मेरे हाथों अगर किसी का भला होता है, सबका भला होता है, तो ऐसे ही मैं एक्शन करूंगा। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उसके काम होते रहते हैं। और उसके प्रोसेस में कोई हर्ट होता है, कुछ पाप होते हैं, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब वो आदमी को समझ में आता है, देन ही बिकम्स टोटली स्टिल, he desist from all actions, he withdraws। यही रीजन है कि योगी अकेले जाके केव में रहते हैं, क्योंकि कोई भी संपर्क में आएंगे तो पाप पुण्य होने की संभावना रहती है, और कोई कारण नहीं उनका अकेले रहने का। संसार में रहेंगे तो अब कोई न किसी को कोई दुख में है, उसका ऊपर दया करेंगे तो पुण्य हो गया, पुण्य भी बांध लेगा। किसी को हर्ट किया तो पाप हो जाएगा, वो भी बांध लेगा। तो बंधन से तो छूट नहीं रहे हैं, इसीलिए वो इस प्रकार के ये करते हैं कि, लेकिन गाइडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम ऐसे एक्शन करें जिससे सबका भला हो, सबका भला हो, ये ध्यान में रख के एक्शन करने का बस। सर बट isn't it that सबसे पहला धर्म खुद के लिए है? सो हाँ, लाइक तो इसी में तो तुम्हारा जो जो योगी है उसका सबसे बड़ा हित यही है कि वो मुक्त होना चाहता है। मुक्त होने के लिए उसको यही काम करना
उसमें अपना ही हित साध रहा है ना। जब मैं कहूंगा सब परहित में ही मेरा हित है, तो फिर बाकी बात ही क्या बची। अगर परहित में ही मेरा हित है तो खत्म हो गया। उससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो योगियों के लिए तो परहित सम परम नहीं धर्म नहीं भाई, पर सी पीड़ा सम नहीं अधमाई। कबीर जब ये बोलता है तो कबीर वैसा जीवन जीता है। वो परहित के लिए जीता है, पर पीड़ा को हटाता है लाइफ से। तुकाराम भी तो यही इन बोलता है। केस जो अजय जी ने जो केस बताया, तो मतलब उसमें ये है कि अगर आपने बोला कि डॉक्टर जयदेव होते तो बोलते थे कि आपकी पत्नी है तो पहले आपका धर्म बनता है कि उनकी खुशी देखे, बट इजंट इट कि उनका पहला खुद के लिए जो धर्म है जो उनको सही लगा, तो तो ही अपनी टुक द अपनी डिसीजन नॉट हाँ, टू गो, तो दैट इज राइट। अपनी बुद्धि से वो निर्णय करना है। ये अजय के लिए हम लोगों में से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। ये अजय को ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम जब भी ऐसी दुविधा में रहते हैं तो हमको ही डिसाइड करना पड़ता है। कई परिस्थितियों में ये योग्य रहता है कि ठीक है सुने वाइफ का, क्योंकि परिस्थिति ऐसी रहती है, धर्म ऐसा रहता है। कई परिस्थिति में अगर वाइफ अनरीजनेबल है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या wife is not able to see what husband is able to see, the consequences in the form of consequences, then it is wise not to listen. It will depend on circumstances. कोई एक फिक्स यार्डस्टिक नहीं है जिसमें हम सब बिठा सकते। तो परिस्थितियों के हिसाब से धर्म अधर्म होता है। नहीं, बट इन एवरी केस लाइक इफ वी सी कि अगर हम सोचे कि बहुजन हिताय मतलब सबका मतलब जो भला है वो ही हम करें, तो फिर हमें जो चाहिए, हम अगर हमारी विवेक हमें लेके जाती है कि ये मेरे लिए सही है, बट हम दूसरों का सोच के ही करेंगे, तो वी विल नेवर बी एबल टू डू इट फॉर आवरसेल्व्स, टेक द डिसीजन फॉर आवरसेल्व्स, नो। नहीं, देयर ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, लाइक देर आर मेनी इनोसेंट काइंड ऑफ एक्शंस जिसमें तुम्हारा भला है लेकिन करते नहीं है। जैसे अभी रोज उठ के आसन करना, रोज उठ के मेडिटेशन करना, रोज उठ के पढ़ना कुछ, रोज उठ के ये अच्छा करना, तो ये अपने हित का साधन है। लेकिन आप जब भी सी वेरी सिंपल, यू डिसाइड टू कम होम एंड डू योर मेडिटेशन। घर बाहर से सोच के आए, अभी घर जाके मस्त में नहा के मेडिटेशन में बैठेंगे, आसन करेंगे। एज यू एंटर द हाउस, सडनली योर डॉटर सेज मॉम आई एम हैविंग फीवर। अब आप क्या करोगे? आसन करोगे, तुम्हारे हित का है। फर्स्ट आप ड्यूटी इज टू टेक या केयर आप ऑफ द अपने बेटे को फैमिली। डॉक्टर के या पास लेके जाओ। ड्यूटी कम्स ये फर्स्ट। तो परिस्थिति के हिसाब से है ना। ये तो हर जगह पे मेरा हित तो नहीं। आसन करना मुझे ऐसा लगता है अब दिन रात थोड़ी मैं मेडिटेशन में बैठा रहूंगा और घर की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। अगर घर में मैं रहता हूँ, मेरा परिवार है, तो परिवार की तरफ भी थोड़ा धर्म है। तो देयर हैज टू बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन दीज। ईच वन हैज टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ। दूसरे का इस यार्डस्टिक हमारे किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। भगवान इसमें ने हमको सभी को बुद्धि दी है अपना निर्णय खुद लेने के लिए। इसमें निरंजन, you remember doctor once quoted about one teacher of the institute who used to come once a week to deliver a talk. हाँ So happened on the day of the talk, somebody in his own house हाँ expired, या and he told the family, "Ki give me some time, I'll just come." He came to the institute, he delivered the talk, came back home and did the rites. Now this is an extreme form of clarity, या sense of duty, एक्सेप्शनल क्या है। extreme clarity, यस and extreme strength of that person, यस which somebody may feel he's totally irresponsible, या but like it is. It is the same case. I remember when Hansa ji's son passed away. That time also, my friend, one of my friend was doing her TTC there, and she said morning में मतलब she gave the parisamvad, and towards the end of the session, she just declared that the funeral will be in the evening at this time. But the morning routine and institute ka everything was all on time. Even she gave the parisamvad. Everything was on time. I think others are listening. Any viewpoint others have, you can open your video and just show your faces, say something. Sir, namaste. Thank you so much. It was a very enlightening session. So,
My question is that when we talk about that any kind of pain that we try to avoid, that also becomes a vasana, very deep-seated one. Yes. So, but as sir also shared and ma'am said, so motivation and intention to avoid the pain, would it matter in that, like suppose the intention is not to be judgmental or to avoid the pain, for it is for maybe self-preservation, or if I avoid a confrontation, so it is basically to buy, maybe to not buy, but be peaceful. So that intention and motivation to avoid that pain, would it matter or no? See, it is important. In fact, it is very important to have this motivation of avoiding pain. But it should be coming from wisdom. It should not be just as a reaction in the form of action reaction, but well thought out. Like when we are living a good life, we are trying to live a healthy life. In a way, there's a motivation that in future we will avoid trouble to the body, we'll avoid pain to the body, we'll avoid disease. So it is a wise thing to do. But day-to-day activities of instinctually avoiding the pain and avoiding the discomfort, sometimes our well-being lies in pain. And that time, if we try to avoid pain, what will happen? We are working against our own self, against our own well-being. There are many opportunities in life where some painful decisions are to be taken, or when we have to go through some discomfort to be able to face the challenge of the situation. But if we are able to go through that pain, that discomfort, then we become better individuals. So it is always, in fact, the ultimate aim. The one of the sutra says, "Heyam dukkam anagatam." जो आने वाला दुख है उसको अवॉइड करना हमारा एम है. So there is nothing wrong in having that aim, but that has to come from wisdom. That has to come as a guiding factor, which will strengthen us, which will really make us so strong and so But this kind of avoidance of pain is not by attaining sukha. See, normal course, what is, we want to attain sukha, but we want to avoid pain. But here, the kind of pain you are talking about, it is the ultimate aim, that ultimately we have to make our life better. So it is coming out of a lot of wisdom. So there's this fine line is there, which is distinction is there. Thank you, sir. नमस्ते सर. हाँ, नमस्ते. तो सांख्या में ये कहते हैं ना कि भोग और अपवर्ग के लिए, राइट? सो जो ये जो दर्द है, कोई भी सिचुएशन है, दैट कीप्स कमिंग, रिपीटिंग इटसेल्फ ऑफन, कि ताकि हम उससे सीख के आगे बढ़े. उससे सीख के आगे बढ़े, बिल्कुल. जब हम ये दर्द के लिए या कोई काम करें या ना करें, तो जब तक हम उसको एक्सपीरियंस करके उसमें से सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे, वो बार बार आता रहेगा. तो हम जितना भी अवॉइड करते रहें, द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस आते रहेंगे लाइफ में, जब तक कि जैसे आपने बोला अभी, विजडम से हम उसको समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे, आउटग्रो नहीं करेंगे, तो आता ही रहेगा. सो व्हाटएवर एक्शन लेवल पे आता ही रहेगा, आगे आता ही रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. उसको समझ के अगर करेंगे तो फिर नहीं होगा. अभी जैसे एक रिलेशनशिप में पैटर्न्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कभी 25-25 साल तक एक ही बात को लेकर झगड़ा चलता है, और दोनों में से कोई भी नहीं सीखता है. अगर एक भी सीख जाए तो फिर वो रिपीट नहीं होगा. नहीं सीखता है, इसीलिए रिपीट होता है. वही मतलब माँ बाप के बच्चों और माँ में होता है, पिताजी और बेटे में होता है, दोस्तों में होता है, अपने कलीग्स के साथ में होता है. ऐसे पैटर्न्स हम लोग अनुभोग हो रहा है, लेकिन हम लोग अनुभव उसको सीख नहीं रहे. तो जब तक सीखेंगे नहीं, वो पैटर्न चलते रहेगा, वो भोग चलते रहेगा. जो एक्शन करना या नहीं करना, धर्म वगैरह जो भी हमें भी डिस्कस कर रहे थे, जो सारे चीज, उसमें भी ये बात आती है कि जब हम जब तक अपनी समझ से वो विजडम यूज करके हम उसको व्हाट इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस, व्हाट इज माय अल्टीमेट हैप्पीनेस, उसको समझ के विजडम के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी ही आगे लाइक द रियलाइजेशन होगा. एंड बिल्कुल. इसीलिए ये विचार करना बहुत जरूरी है. एक्शंस और मोटिवेशंस हमारे कैसे हैं, क्यों हम कोई चीज कर रहे हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए. थोड़ा थोड़ा एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए कि ये क्यों किया. ये करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है. तो उससे अगर फ्री हो गए तो उसमें होने वाला बंधन जो है वो टल जाएगा, उससे आने वाला दुख जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. थैंक यू सर. ठीक है. लीव इट हियर. निरंजन, हम लोग की शादी को
36 साल हो गए हैं, अभी अरे तक पंखे की जो स्पीड है हाँ उस पे अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है। तो एक को तो मानना ही पड़ेगा कोई भी। नहीं मानेंगे तो फिर वो पैटर्न चलते रहेगा। ये अच्छा एग्जाम्पल। एक आदमी दूसरे से बोला कि इस बार जो कुंभ मेले की जो सिक्योरिटी है वो एकदम जबरदस्त है। बोले क्या हुआ? बोले मेरी वाइफ 3 बार गुम गई और तीनों बार उन्होंने मुझे लाके वापस कर दिया। हाँ वो तो कई लोग तो कुंभ मेले उसी ले जाते रहेंगे। गुड। ठीक है, विल मीट थैंक हियर। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Thank Thank you, you, sir. sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It's wonderful.